ये समझना, मैं एक संत के रूप में सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, हम भी 8-10 घंटा काम करते हैं। We run hospitals, hostels, schools and colleges. We run 162 different kinds of activities. जो दिल्ली में अक्षरधाम है, वहां हमारा स्टाफ 800 का है। शायद आप में से एक भी यहां नहीं बैठे हो जिनका स्टाफ 800 का होगा। 800. And they are full from HR to administration to management to infrastructure to system. सब हम संत करते हैं। तो we know all these things. ये दो बात सीख के कोई अच्छी सलाह देने के लिए आपके पास नहीं आया हूं। हम बैलेंस करते हैं, आप भी बैलेंस कर सकते हो, तो ही आपको जीवन में संतोष मिलेगा। ये बैलेंस अगर नहीं कर पाए, पूरा दिन दौड़ 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 किया, डू यू वांट टू ड्रिंक द होल सी ऑफ योर प्रोफेशन? टेल मी यस और नो। यहां पुणे से कितने आए? जस्ट रेज योर हैंड्स। मुझे बताया गया कहीं आए, कहीं आए। मुंबई से कितने आए? आए। मैं आपको ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप पुणे में प्रैक्टिस करते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में। पुणे में जितनी कंपनीज हैं और जितना अकाउंटिंग का काम है, वो सब आपके पास, आपके टेबल पे, आपके फर्म में आ गया तो कर पाओगे कि नहीं? ऑल द वर्क, यू आर फ्रॉम पुणे, एवरी and all the accounting work of the entire city of Pune comes on your table, then मर जाओगे। संन्यास ले लूंगा, आ जाओ इस तरफ। क्योंकि वहां जो करते हो उसको काम बोलते हैं, यहां जो करते हो उसको सेवा बोलते हैं। बहुत फर्क है। वहां स्ट्रेस आएगा, यहां करते हुए भी स्ट्रेस नहीं आएगा। In the last 1 week, I traveled to six cities: Aurangabad, Nasik, Delhi, Akola, Nagpur. Today, Segaon. Tomorrow, I'll talk in Mumbai. Stress नहीं है, देखो काम तो हम भी करते हैं। बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा स्पिरिचुअलिटी के साथ। What I mean to say, you can, whenever you are at most thirsty, you can have maximum 2 glasses of water or a jug of water. You can never drink the whole profession, whole sea of your profession, isn't it? Then why are you sitting till 11 PM in your office? स्ट्रेस बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी, अनएथिकल प्रैक्टिसेस की तरह लीनिंग बढ़ेगा, काम की बोझ की वजह से। People have understood this. So the France government has passed a bill from the parliament. It has become a constitutional law in France, and the law is the right to reject work after 6 PM. If you are a French citizen and working in France, you have the right to reject work at 6 PM. आपके बॉस का मेल आप पे आया, and if the mail is at 6:01 minute, you have the right to reject it. ये भी नहीं आंसर देना कि कल 9 बजे आपको मेल करूंगा। Nothing, you don't touch it. It is a constitutional right. और इससे भी बड़ी बात आपको कहूं, next week they will pass a bill in the parliament in New Zealand, 4-day week. It is the first experiment upon this earth. But for last 1.5 years, they have surveyed all professions in the country of New Zealand. They have come to this decision after consultations with high-end professionals, middle-end professionals, and low-end professionals in all professions. And they have come to this conclusion: 4-day week, Monday, Tuesday, Thursday and Friday. वे जानते हैं बैलेंस शीट ऑफ लाइफ मेंटेन करनी पड़ेगी. I was talking at IIM Udaipur just about 2 weeks back to the fresh students there who have joined the management program. I was supposed to talk on IQ, EQ, SQ, and thereafter we had the questionnaire. And somebody asked me a simple question, one of the faculties there. He said that, Swamiji, do we have one-line solution to all the problems upon this earth? I said, yes. One-line solution to all problems upon this earth? I said, yes. And I said, if all the people upon this earth decided to stop work at 6 PM, wherever they are, and go back to your family, 95% of the problems of your life will be solved. From family time to health, to hobby, to distressing, to relief, everything. एक ही बात सबको करनी है. तो बैलेंस शीट ऑफ लाइफ मेंटेन करना बहुत जरूरी है. If you have not enjoyed the growing up of your children,
if you're not spend hours with your family members sitting in the rain and enjoying good food, what the hell are you doing as a CA? Any professional, doctor or engineer, whatever. I will call my profession as because I did my engineering before I took Diksha, way back in 1992. कोई भी profession में आप हो, if you've not enjoyed your life at time, it is not a good balance of life.